Okay, let us start the work of today. Today we'll see the last topic of Unit 1, that is, it contains system stresses, entropy, functional and cross-functional systems, and lastly, Stephen Alter's 9-element work system. Now, first of all, we know what are stresses. We have studied already in engineering mechanics, strength of materials. Then we have seen those were, solid material stresses or physical stresses. Then we have studied thermal stresses and thermal engineering. Here, what we are exactly saying, commonly stresses का मतलब वही है, लेकिन टॉपिक वाइज इसका एप्लीकेशन या इसको समझने का तरीका अलग होता है. यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज बिजनेस स्ट्रेस. So how and why and for what factors these stresses came out in and how it affects the business. So obviously these stresses normally comes from the environment side, normally from the outside the boundary of the system. So but it creates stresses inside the system. It is like it came certain kind of messages or any condition which comes from the environment side and which is across the boundary, but it increases the stress level of the system, and therefore to relieve these stresses, we need to take up certain actions quickly, very quickly. See, when we are dealing with a business, or rather, since we are mechanical engineers, so we talk about more on manufacturing. So manufacturing में अगर हम अपनी factory को एक system माने, तो we have many other many other external sources. Sometimes जैसे हम लोग टायर इंडस्ट्री में थे, तो परचेस का एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है जो कि बहुत सारी सप्लाईज के ऊपर डिपेंड करता है अक्रॉस दी वेरियस डिपार्टमेंट्स और सब सिस्टम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम. तो बहुत सारी सप्लाईज होती हैं, राइट फ्रॉम स्टेशनरी टू इंस्ट्रूमेंट्स टू वर्क पीसेस. Many of the services we need from outside the system, that is from the environment. So but stationary एक बार कम हो जाए, it is okay, we can handle. but raw material है procurement के लिए, या कोई particular operation इंडस्ट्री से बाहर से कराना है, सो दिस वे काफ़ी चीज़ें की डिपेंडेंसी हो जाती है. तो ये तो नॉर्मली वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमको थोड़ी डिपेंडेंसी है, लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स लाइक गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई है ना, गवर्नमेंट ने ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसे मेजर्स ले लिए, या कॉम्पिटिटर्स ने कुछ ऐसे स्टैंड्स ले लिए जिसके कारण सिस्टम में स्ट्रेसेस क्रिएट हो गई. हम से मान लीजिए वो प्रोडक्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे, बट हमारे कॉम्पिटिटर ने हमसे पहले वो प्रोडक्ट ला दिया और आज से पहले वैसा प्रोडक्ट नहीं था मार्केट में. सो द स्ट्रेस विल गो अप इन इनसाइड द सिस्टम. रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ गए, या आउटसाइड सर्विसेज जो हम ले रहे थे उनका प्राइस बढ़ गया. सो many points are there which drastically increase the stress level inside the system. Then what to do, say suppose जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया में, चाइना या किसी दूसरी कंपनी का कोई ऐसा प्रोडक्ट आ गया विच इज चीपर इवन देन डोमेस्टिक प्रोडक्शन. तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, उनको इधर प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत हाई करनी पड़ेगी और बहुत या तो प्राइजेस को, कॉम्पिटिटिव प्राइजेस को डाउन करना पड़ेगा. तो then and only then that is the way to survive in the market. So this way immediate actions are required, but in a well planned manner. Then comes the system entropy. Entropy we understand in terms of thermodynamics, thermal engineering, we have studied
Entropy means randomness or kind of a disorder in a particular zone or a system as a whole. So this kind of order disorder we have earlier understood in the entropy in thermodynamics, but we need to measure the systems energy of doing work, and also will do the measure of disorder also. Now why to do and how to do, that we have to that we have to see, है ना? So and we know the increase in entropy, the more increase in entropy, the greater will be that randomness or the disorder. Now, disorder has to be measured, or randomness has to be measured to be taken care of because of survival in the market. And another thing, we have to see whether because of this randomness disorder, what is the impact of it could happen that it is a positive impact towards us. It could happen that it gives a negative impact towards us, but also negative impact sometimes give you an opportunity to perform and to निखर के market में आना या निखर के कहीं आना. That gives you many of the times opportunity. So negative term cannot be taken as negative. Ultimately it's an opportunity to reproof ourselves. So that ways that is and but at least that needs to be measurable, and we have to measure it so as to take the proper action against that condition. Another thing is, in thermodynamics we have seen that we used to study about the system at the atomic level, ionic level, molecular level, but here what we are doing, we are measuring it at business level, है ना? Business level में. So as a system, we are a manufacturing unit as a system, and outside the system, whether it is our supplier and service providers, customers, raw material manufacturers, whatever it is, that comes in the environment side. And those environment side people, or government, even government policies, even so, these are all the factors which can impact the stress and entropy level of the system. Okay. Now entropy and this kind of randomness also have associations with equilibrium of the system. Yes, we were going in a particular set of set of rules, regulations and instructions. Say shortly, we have a particular set of mind we are going with to meet the targets, but all of a sudden some new policy came into, or many of the other factors may hit upon parallelly also. So वो अगर आते हैं तो technically entropy from this perspective could be uh, a different one. Entropy will be on the higher side, and which is a which needs to be measured how close it affects the equilibrium of our business system, and that had to be rectified first of all internally. Then we will able to respond properly to the environment. Likewise, the value of that entropy has to be measured, and that will give us to reshuffle the things in the internal side. Then comes the we have seen system entropy. Then comes the functional and cross functional systems. Now what are functional and cross functional systems? Functional and cross functional systems, basically it's a functional team of functions. We can understand thereby we have many functions, like procurement function is different. Okay, then HR, itself a function. Then plant team, that is a team who has established the plant, so that is a plant team. Plant team is there. What plant team used to do? Plant team used to now normally maintain
the plant as per the requirement given against the the standards of establishment of the plant. जो उन्होंने जो एस्टेब्लिश किया था उस समय, जो प्लांट एस्टेब्लिश करते समय जो उन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए थे, उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना। दूसरा, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स अलग अलग फंक्शन से आ रही हैं तो उनको फुलफिल करना। अब प्लांट टीम का काम सिर्फ इतना रह जाता है। देन कम्स मार्केटिंग टीम, तो बाहर का एक तरह से गिन सकते हैं। देन वी हैव परचेज, देन वी हैव इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टीम, then we have R&D team, then we can have technical team also. Technical team are those which help production engineers or production employees, production people, to to produce uh, the product in a proper manner, because basically it sometimes bridges the gap between design department and production department. So design department से design लेके कैसे produce करना है, sometimes वो production people को help करता है उस तरीके से। Then comes the inspection department, maintenance department, FGS. Then we have power production cell. Then we have many of the cells available this time. So these are known as functions. The function, it has a certain team. So what we are calling them functional team. It is a group of people which has common functional expertise working towards a shared objective. Like design people has a common functional expertise of designing a particular component, and they know what are their objectives is all about. And simply now, when we say like a cross-functional team, it is a group of people from different functions. Sometimes these kind of cross-functional groups or teams are formed to create to work on a new project, and sometimes to execute the current project, they create the leaders of every functional team, and all the leaders of those functional teams will form a team that is called cross functional team, which supervises the work status of that particular project which is going on, or which is going to come down to the system or the manufacturing system. So typically it includes employee from all the level of organization. It can happen that it includes uh, employees from all the level of organizations. Members may come from outside the organization. Sometimes it is required, like if we go for certain kind of documentation and all, then we need people from outside the organizations as well. Like many of the vendors, some certain operations we could not perform into the manufacturing system, and we need that expertise from outside. So the person who do this kind of vendor service to us can be also part of cross-functional team. And suppliers can be part of team, but permanent suppliers. Sometimes we have consultants, sometimes we have certain key customers also, or we can say OEMs kind of customers, which are really the key who build our brand. Actually, customers are of two types mainly. One is OEMs, and one is replacement market. So what is OEM? OEM is basically like I was in Apollo Tires earlier. So what we used to do, we have two markets available with us. One is OEM and one is replacement market. Replacement market is, since Apollo it is meant for tire manufacturing, so we know now and then many of the automobiles require tires. So we can go to a particular shop and we ask for a tire of particular size. We can get it from the normal retail shop, or sometimes company outlet also. That is called a replacement market. But uh, say like Maruti, Mahindra, and many of the automobile company requires at least 5 tire for a particular automobile, of per unit. So this kind of deals called
OEM dealing, that is original equipment manufacturer. Say like Maruti, we require 2 lakh tires for a month to Maruti for a particular plant. So these kind of customers are called original equipment manufacturers. सो जब एक कार कंपनी कार बना रही है तो उसकी एंसिलरी कंपनीज भी कह सकते हैं. एंसिलरी तो सिर्फ उसी के लिए प्रोडक्शन करती है, लेकिन ओईएम जो होता है उसको बहुत सारी चीजें चाहिए रहती हैं. टायर्स चाहिए, रियर व्यू ग्लासेस चाहिए, लॉक्स चाहिए, ग्लासेस चाहिए. तो अशाई ग्लास बनाता है, मिंडा लॉक बनाता है, अपोलो है, जेके है, महिंद्रा सॉरी मिशलिन है, ये सारी कंपनीज टायर्स बनाती हैं. This actually automobile company does not manufacture this kind of suppliers used to supply, जो उनको अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाने के काम आता है. बट स्पेसिफिकेशन विल बी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर. उसकी स्पेसिफिकेशन होती है कि मेरे को ये चाहिए, उस हिसाब से वो सप्लाई होता है और इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंग फिर चीजें होती है, आती है, एक्सेप्ट की जाती है जिसको कहें. Cross functional team often function as self directed teams which is assigned to a specific task and which calls for input and expertise uh, expertise just a minute. Which calls for an expertise also from outside the organization, as I told you earlier, that can be suppliers and customers and other consultants and some other vendors or can be also a part of that cross-functional team, है ना, cross-functional team. So to give the why we are preparing this kind of cross-functional team is to task a team who has assigned a task should be composed of multi disciplinary individuals, which increases the level of creativity, and sometimes out of box thinking matters. Like I am from design and some manufacturing people, you are using some kind of particular tool which which interrupts some processes. If I'll go spare time and look into it, I may suggest something which is out of box for them, uh, out of box thinking for them. What is out of box thinking? First of all, we have to understand, बिकॉज जो काम हम कर रहे हैं इन ए कन्वेंशनल मैनर, जो हमारा माइंड सेट है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, हमारे टेक्निकल लॉजिक्स हैं उसके पीछे. बट समटाइम्स वी आर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इज लाइक काइंड ऑफ अ रैंडम आइडिया. Sometimes it hits like it gives a grand success or a better success than the conventional approach. So this kind of out of box thinking is really required many of the times. So this kind of team is very much required for this, because uh, हर फंक्शन से एक मेंबर होगा और वो एज अ होल प्रोजेक्ट को देखेगा. वो पूरी टीम पहले परचेज जाएगी तो उसमें एक परचेज का भी बंदा है, लेकिन परचेज के अलावा वाले भी बंदे हैं, तो दे मे सजेस्ट मेनी ऑफ द थिंग्स टू दोज डिपार्टमेंट्स. तो इससे क्या होगा, ओवरऑल जो क्रिएटिविटी लेवल है वो इंक्रीज होता है और चीजें बेटर होके आती है, विच हेल्प्स अस टू increase our survivalness in the market, or increase the brand level in the market, or increase the customer base in the market. So that way it really matters to us. And now each member definitely will offer an alternative perspective to the problem. A project means a collection of problems. Now, if we need to get the success in the project, we we as a whole needs to come over to all the hurdles and produce the desired work, desired product to the customer. So for that we have certain number of problems to go through with the production or making of it. So alternate perspective to the problem, potential solution is the basic task of that team, because every function is expertise in their
expert work in their expertise domain, rather I should say. But sometimes many of the people may stuck. It is not like the inefficiency of a particular person, but sometimes the situations comes like we are unable to deliver the things, or we are stuck somewhere. So in that situation, if somebody is coming from outside and suggesting us, this will help us a lot to increase the pace of the project completion towards completion. So this helps us a lot in regarding this. Now the innovation is a leading competitive advantage, and definitely cross-functional teams promote innovation through a creative collaboration processes. So this helps us a lot in that regards also. Members of cross-functional team must be versed in multitasking. They should be enriched in multitask work, because they have to handle as a whole, as a they have to handle each and every department through their enlight through their wisdom, as they are simultaneously responsible to all the small work happening across all the functions. So they are their normally day to day work. Now some researchers has seen that cross functional interactions in nature are sometimes cooperative in nature, sometimes competitive in nature, sometimes cooperative in nature, sometimes you know cooperative in nature, sometimes competitive in nature, while others may have little urge to that organizational functional areas are often forced to complete or cooperate simultaneously with another kind of a competition, which is really critical to understand how these complex relationships interplay to affect the firm performance or the desired performance, what we call normally we have used this terminology, that is desired performance. Desired performance is like customer ends requirement, we can say. Okay, so now the decision making within a team will depend upon the many of the consciousness, but often it leads to whomsoever it is dealing. If it is a manager, if it is a coach or a team leader, that includes the leadership quality. And now leadership will be a very significant challenge, because we know cross-functional team is what leadership team. It has to that team is responsible for supervising the whole project till the completion of it. So that team or leaders has to be charged with the task of directing that particular team of members discipline with various disciplines or departments, what we call. Okay, now they must transform different variations of input um, into one cohesive final product. Cohesive माने जो complete एक final output हो. So these cross-functional teams are uh, likened or made by the board of directors of the company. So ताकि वो पूरे प्रोजेक्ट को देख पाए हैं. अच्छा, एक डिपार्टमेंट और होता है, एक होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर का और एक होता है प्रोडक्ट मैनेजर का. एक ये डिपार्टमेंट्स नॉर्मली डिजाइन से ही जुड़े हुए होते हैं. नो, व्हाट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर एंड व्हाट इज प्रोडक्ट मैनेजर? प्रोडक्ट मैनेजर कंप्लीटली सेल्स वाला बंदा होता है, और इसको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी मिली हुई होती है. जैसे मैं अपोलो टायर्स में था, तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी का मैं डिजाइनर था, फार्म एंड ओटीआर टायर्स का. उसका एक प्रोडक्ट मैनेजर था, मतलब जो कि सेल्स को डील करता था. एंड उस हम दोनों के बीच में एक बंदा था प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर. नाउ व्हाट इज दैट प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर? प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर क्या करता था? प्रोडक्ट मैनेजर जो था वो पूरे सेल्स पे डिपेंड करता था. सेल्स के फिगर कहाँ किस जोन में कितने हैं, क्रॉस इंडिया कितने हैं, इंडिया से बाहर कितने हैं. लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर जो था, दैट वाज ब्रिजिंग डिजाइन डिपार्टमेंट एंड फील्ड डिपार्टमेंट, दैट इज सेल्स डिपार्टमेंट. नाउ प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर क्या करता है? फील्ड की जो टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं, एक तो टेस्ट रिपोर्ट्स
क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसकी टेस्टिंग होती है ISI स्टैंडर्ड्स, जो BIS स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपन बोलते हैं। अगर इंडिया में सेल होना है, जापान में सेल होना है तो GIS स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सेल होना है तो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो उसकी टेस्टिंग होती है, उसकी टेस्टिंग डिपार्टमेंट्स यहाँ अवेलेबल होते हैं, वो सर्टिफिकेशंस के बिना हम नहीं कर पाते। तो एक ये सर्टिफिकेशंस, फील्ड रिपोर्ट, फील्ड फेलियर रिपोर्ट रादर आई शुड से, तो फील्ड फेलियर रिपोर्ट्स हम प्रिपेयर करते हैं। फील्ड फेलियर रिपोर्ट्स की जरूरत होती है टू इम्प्रूव, टू फॉर द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन दी प्रोडक्ट। तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो हमको प्रोडक्ट में चाहिए वो हमको देना होता है उनको, ठीक है। नाउ वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के इनपुट्स PDM जो है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर जो है, वो डिजाइनर तक लेके आता है। तो डिजाइनर फिर उसको, और डिजाइनर को रिकमेंड करता है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, कि इस डिजाइन में मैं क्या चेंज लाऊं कि जो ये वाला फेलियर है वो हम नेक्स्ट लॉट में मेट कर पाए मार्केट में, और उसको कैसे ब्रांड करना है वो भी वो तरीका सोचता है। फिर वो सेल्स फिगर्स को भी देखता है, कॉम्पिटिटर के सेल्स फिगर्स को भी चेक करता है कि उनके फिगर्स कैसे हैं, हमारे फिगर्स कैसे हैं, और हम ऐसा क्या करें। अच्छा, वो साथ ही साथ डिजाइन इंजीनियर से कॉम्पिटिटर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी परचेस करवा के उनकी भी टेस्टिंग करता है कि ऐसे क्या कारण है कि टेक्निकली कि उनका प्रोडक्ट हमसे पैरेलल है या हमसे ज्यादा बिक रहा है। दूसरा, ब्रांड वाइज भी, ब्रांडिंग वाइज भी। तो ये सारा फील्ड रिपोर्ट्स, जो एजेंसीज रिपोर्ट्स, प्लस कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट स्टडी, प्लस जो क्या कहते हैं सेल्स के फिगर्स हैं, इन सब की स्टडी जो होती है, या कंपैरेटिव स्टडी रादर आई शुड से, और जो सजेशंस हैं वो बना के डिजाइन डिपार्टमेंट प्लस प्रोडक्ट डिपार्टमेंट दोनों को देता है, सो दैट वो प्रोडक्ट का जो ये है मार्केट है वो अपलिफ्ट हो सके। सो इस तरह से ये चेन है, डिजाइन डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्ट डिपार्टमेंट। प्रोडक्ट डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर, जैसे फॉर्म OTR का हो गया, फिर उसी से जुड़ा उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर फॉर्म OTR का हो गया, फिर उसी से जुड़ा उसका डिजाइनर फॉर्म OTR का हो गया। इस तरह से दूसरे जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं उनके भी ऐसे ही लोग जुड़ते हैं। तो इस तरह से डिजाइन डिपार्टमेंट भी प्रोडक्ट कैटेगरी में बटा होता है। जैसे आप ऑटोमोबाइल में जाओगे तो कार्बोरेटर डिजाइन सेक्शन अलग होगा, है ना, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड डिजाइन सेक्शन अलग होगा, जो सिलेंडर पिस्टन डिजाइन डिपार्टमेंट है वो अलग होगा, उनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर्स और उनके प्रोडक्ट मैनेजर्स अलग होंगे। सो दिस वे, मतलब उनका प्रोडक्ट मैनेजर तो एक ही होगा लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर्स अलग अलग होंगे, बिकॉज फेलियर हर कंपोनेंट के अलग अलग आ सकते हैं। तो अलग अलग फेलियर्स को एनकाउंटर करने के लिए अलग अलग डेवलपमेंट मैनेजर्स होते हैं, जो कि फर्दर रिकमेंड करते हैं डिजाइन डिपार्टमेंट को कि ये करो। समटाइम्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर और जो डिजाइन इंजीनियर्स हैं दोनों एक ही डिपार्टमेंट में होते हैं, समटाइम्स डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन दी इंडस्ट्री का हायरार्की लेवल कैसा है, या इंटरनल स्ट्रक्चर उनका कैसा है, दैट डिपेंड्स। ठीक है। नाउ सम ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड cross functional team which monitors the workflows by providing report to multiple level of managers, which is called, this type of management is called metrics management, इसको metrics management कहते हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑफन मैट्रिक्स मैनेजमेंट को देखते हैं, and they closely watch it. Now comes the last topic of our unit 1, which is and unit 2 is a little small, so we'll complete within 2-3 days, no issues। बहुत बढ़िया, सिंपल है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है, उसमें प्लानिंग कैसे कैसे होती है, कुछ थ्योरीज हैं 2-3 तरह की, दैट इज मोर देन एनफ। उसमें एप्लीकेशन, बस ये चीजें हैं छोटी छोटी, बहुत बड़ा नहीं है। विल कंप्लीट विद इन द अलॉटेड टाइम। Then comes the Stevens Alder 9-element work system. Now, what is that exactly? इस डायग्राम को हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पार्टिसिपेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजीज हैं, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज हैं, देन प्रोडक्ट सर्विसेज एंड कस्टमर्स हैं फाइनली। ठीक है, और एक तरफ एनवायरनमेंट लिखा और एक तरफ स्ट्रेटेजीज लिखे। नाउ व्हाट इज दैट, लेट अस अंडरस्टैंड together। The central idea in a work system theory
is a it's natural unit of analyzing the things about the system in particular organization. Now the organization की कुछ settings होती हैं, and work, which is the application part of human, which includes information, physical and other resources, which helps to produce the product and deliver, rather produce and deliver the products and services. Now the work system is a system, we need to understand, which human participants or machines performs those processes and activities using that particular information given, technology and other resources, which produces the specific product and the services required from the environment, that is the customers. Now typically business, if we talk about business, organization contains many kind of work systems which produces material from which produce procure material from rather procure material from suppliers, produce the products and deliver it to the customers. Now find the customers, create the financial reports, hire the employees, coordinate work across the departments, and perform many other functions also. It is possible to of an organization, it is possible to think of an organization to set up a work system. So these definitions also have 9 elements of a work system, which are process and activities, then what we call participants, then we call technologies, we call products and services, then we have end uh, environment or end this thing, what is the end of the cycle, which is customer. And then so this way our model gets completed. Now so this kind of a setup, all the function has to perform in a synchronized manner so as to reach up at the top of the pyramid, which is customer. So everything has to be in line and interconnected in a proper fashion so as to reach a particular target of this tip apex of a pyramid, which is fulfilling the requirement of any product or services asked by the customer. So this was basically the Stephen Alter 9 element work system. I'll share the notes also with you by the end of the lecture. We are about to complete our lecture. We have only 2 minutes to go. So I'll be providing you the notes also through WhatsApp, and that will be PDF notes of that unit. Okay, if you have any doubt, you can ask me now, or we'll call up a day then. And tomorrow we'll start with unit 2, which is very simple and smooth. You must have studied in school also, if you have taken any management subject also, and an option or elective. Today we have a unit test of unit 1. So be prepared, and it will be at 12:30. From after this lecture, you'll be having a lecture of Abhimanyu sir, and then you'll be having a lecture of have a nice day ahead.